Assalamu alaikum. So we'd like to welcome you tonight for this event. Second time around, we are visiting all our friends in Toronto for the Noor project. And then, hopefully many of you already have seen us or have seen some of the booklets that you have and what the Noor project is about. So just as we are going to start any program that we do it in the name of God, and we start with the Quran recitation. So I would ask Brother Muhammad Ahmed to come over here and give a recitation, please. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Once again, thank you everyone for taking time out tonight for this occasion. We will hope to inspire you tonight with some of our achievements of the Noor project. Introduce myself, my name is Asif Mustafa. I'm a former Canadian but living in New Jersey with Brother Khalid Sheikh, and we've been embarking on this amazing journey to enrich the lives of many of the Pakistanis that have been forgotten and marginalized. I'm currently quit my job to do more as Chief Operating Officer for the Noor project. And I was actually fortunate enough to work with Khalid Bhai as it started, and I went to Lahore, and when I saw what was accomplished in a short period of time by one person's growth, one person's drive, it was very inspiring, and I'm sure many of you who've gone there are probably going to do the same. So I don't want to take too much time, but obviously we'll have time to chat more. But we want to show you what we've achieved, and based on that, we want to start the program off, and we'll do with the recitation of the Canadian National Anthem. Oh
So just to give you a little background of what the Noor project is, obviously our mission through the Noor project is to equip impoverished communities and to help people escape the cycle of poverty and make them more self-sustainable. That's the biggest mandate of the Noor project right now in our mission. The vision is to create self-sustaining communities in Pakistan and beyond. We hope to grow that globally, inshallah. And the goal is that, again, it's not, we're starting at a small level, but, the saying is, if you don't help poor people, it eventually, your mandate, there's so many people that we have to help, so we be able to, inshallah, be able to scale that and grow this and have it impacting more lives. So just in terms of geography, as we know, the Noor project, the actual facilities that you're seeing and all the beneficiaries are based in Lahore, Pakistan. This is where all the service and facilities are. Our CEO and our CFO are there, and many department heads. Fort Lee, New Jersey is where it all started, actually the vision of Brother Khalid. This is where we live in New Jersey, and this is where the administrative headquarters are. And the founders were there, and this is where the official U.S. headquarters are. So on that note, I want to invite a person who's, mashallah, has done very amazing things that I could not really imagine many of us been doing in terms of what we could be doing in this stage of our lives. On that note, I would like to invite Brother Khalid Sheikh, the founder, to come speak, please. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Truthfully, I wanted to say a lot of things, mashallah, the new project, to Kaoda, Canyor and all that. But I was asked not to do that now and try to keep it as short as possible. So I just wanted to, first of all, thank Allah for putting us all together here. And I want to thank you all for being here, especially the beneficiaries we are dealing with. From the bottom of our hearts, we really appreciate we all together here for that. I'm going to wait until after a little bit, and I'm going to come up with some, just to show you what improvements and how much we are building going forward with the numbers. So I'm going to give it back to Asif, and we'll take it from there. Thank you. So one of the things I guess Khalid I forgot is he's very passionate about the Noor project and what our logo represents. So if you see the Noor project, if you look closely, the Noor, what is that? It's the fire, the light, it's the beacon of hope for many people. With that, there is a mother in there who's the protector and provider who gives hope to the child. And the child is vulnerable, innocent. Somebody who's the innocence cannot be measured at this stage, and we want to keep that innocence into their, use that as a development for them to be a compassionate person. And then from then on, the Noor project puts it all together as a comfort and safety and a compassionate, and that's how everything has become our logo and what we look to strive as part of the Noor project. So in putting this event, we know it's not an easy event to do and bring so many people together. A lot of dedication, a lot of effort and time, and the devotion of people who've seen what we can do if we work together. On that note, I'd like to invite Professor Yasmin Javed Khan, who was very critical in us in setting this program together. And she had visited us, and she had shown that she was very amazed, and that amazement showed in her passion in putting this together. So I would like to invite her up to say a few words. I'm very honored. So first of all, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. And I love to recite our national prayer, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. May Allah bless this project. From the core of our heart, on behalf of all of them, I would say thank you to everybody. Each one of you. It was not easy to come in freezing weather and on long weekend. Really, thank you very much. And what does it show? And that shows that every one of you
has the same passion as Khalid Bhai, Amjad Bhai and Asif Bhai and all of us organizing committee. We share the same passion. I won't take much time, but only one thing I would like to share with you. I'm very new entry to this Noor project. Just few months back, I was invited by Amjad Bhai to come in their fundraising dinner, and it was just like this evening in Flatties Hotel, Lahore. And I saw, honestly, I didn't know about it because I lived in Canada since 1992. When I saw them, I was literally like me. Many people were crying. It was touching our heart. I am a co-founder of GMS platform, Global Medical Service. It's a digital platform of health and wellness. And we share the same vision as them, that our focus is underprivileged community in health and education. Then and there, I decided to merge our GMS with the Noor project, because the way they are doing, there is no point of having 20 and no impact. It's much better to join hands together. My message today is, please, when you leave this auditorium, when you leave this, each one of you should reflect on where your life have been, where your money has been spending. Is it the money which is accumulating in the bank gives you happiness? Or the money which you invest in this project, seeing them growing, multiplying, not in front of Allah, but in the world. Thank you so much. Jazakallah. So just a little bit about the local initiatives and the recognition that the Noor project has gotten in Pakistan. So we've got support actually from Imran Khan, who actually had visited the Noor project and said that this was actually the model NGO of what Pakistan needs from people and the charity that they provide. It's not just to feed them once. It's not just to feed them once, but to help people get out of poverty and break that cycle. Because you know how hard it is. Once you're born in a certain family or caste or in a families, it's hard to break out. And this is actually taking kids to elevate them and give them more confidence, which is very lacking in a lot of NGOs. You know, so we've partnered with many organizations such as Baitul Mal, and you can read that. I won't go into it. You know, we've had many other initiatives that we started, and we'll tell you about. This Roti project is amazing, which is something that, you know, couldn't imagine. It's like the concept of take a penny, leave a penny, where it accumulates and it ends up feeding. And you'll see how many people we're feeding with this Roti program, and it costs very little. There's, you know, we have support from local medical, dental professionals who are seeing this, and they're like, wow, you know, we should be doing more, and the Noor project's enabling them as well. We've had discussions and with collaboration with many other organizations such as Indus Hospital and you know, Lahore unions, and this is growing rapidly as well. And lastly, we have the expansion of our service. We're becoming a very recognized brand in Pakistan, right? So it's all about brand recognition, and when people see, you know, the Noor project, we want them to see what we really represent, inshallah. The logo is set up such a way, and if you notice the figures, there's a mother and a child, and who takes care of the child more than the mother, of course. The mother here is the Noor project, which is us, and the child is the beneficiary. We really care. I mean, that's how we care. We will take care of them. And the flame is, there's a light end of a tunnel. So means when they come to us, we show them the light end of the tunnel, meaning that's why we have the vocational institute, we have the school and so on.
the growth, and you guys will see this, because again, like I said, seriously, they put me on a time limit. If I start going, you won't have dinner till tomorrow night, so they know that, they stop me for saying this. But I just want to let you know the growth, mashallah. In our feeding center alone, last year, we gave out 4 million meals, mashallah, and this year we're on the target of 5 million meals. The grammar school, now feeding center is the ration and the food we cook on a daily basis. Grammar school, mashallah, we had 660 students last year. This year already we have 720. Every year we enroll 60 to 80 kids. And the school, mashallah, the building we had built, which is state of the art, it holds 930 students. The healthcare, as far as the clinic, pharmacy, mashallah, we served 20,000 patients last year out of the clinic. This year we're on the target of 30,000. Dental care clinic, we did 25,000 patients. We are on the target for 30,000 this year. Girls' home, we have 80 beautiful angels. These are little girls from 3 years, average from 3 to 11, 12, and we have few who have grown up and they're teenagers now. We are actually putting an extension at the orphanage of about 6,000 square feet, and we're going to be taking 40 more girls, and they will explain it to you in the movie. So basically 80 girls orphanage last year, and this year, mashallah, 120. We do Izzat Roti, which is the roti department, mashallah, naans. Last year, mashallah, mashallah, we gave out 5 million naans. And this year we are aiming for 8 million naans. And this is all over Lahore, by the way, the naans we are giving out. Legal aid, we did 450 cases, and this year our goal is 560. Microcredit loan, last year we gave out 5 million Pak rupees. This year we are in the range of about 6 million Pak rupees. And then we have 2 other new projects we are going in after August, which is the college and the housing. And that will explain it to you on that. Are we good? Okay, thank you. Actually provides more than one service. We provide 12 different services from the feeding center, legal aid, food bank, microcredit loans, inshallah. So that being said, we want to go with the what our objective is today, which, as we know, Allah's promise is when you give someone charity, you're thankful to them because they're actually allowing you the opportunity to fix their dunya, but they're actually fixing our akhirah. So on that note, Sadaqah Jariyah, which is the Noor product, is a good deeds keep accumulating, which we want to keep doing throughout our lifetime. So I would like to call up Khalid Sheikh and Brother Amjad to give a little bit of background about the Noor project before we proceed as part of our fundraising effort. Just on a note, as we have, is our partner here is Hands for Charity, given that we are a U.S. organization, but we are in the process of registering a Canadian entity, and our partner Hands for Charity are going to be processing our donations for us, and they are the ones who are, if you have to write a check to, or they will please write it to Hands for Charity, and they will process all the tax documents for you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कुरान की तलावत हो रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि उनका भी शो है और वो अपने शो को वो चला रहे हैं, और हमें जो हम करना चाह रहे हैं वो काफ़ी सारा आपने देख लिया, लेकिन एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी बारी आती है बोलने की, कि आप इतनी सारी इंग्लिश सुन चुके होते हैं कि आपको फिर उर्दू सुनने पे मजबूर करना पड़ेगा, मुझे आपसे उर्दू में बात करनी पड़ेगी। कहाँ से शुरू करूँ? 12 साल का सफ़र है। हमने एक छोटा सा बीज बोया था
लाहौर के अंदर प्राइवेट रोड के ऊपर एक स्कूल था जिसमें सिर्फ 50 बच्चे थे और वो 5वीं तक के बच्चे, बिल्कुल प्री क्लास प्ले ग्रुप, और उसके बाद 5वीं तक। उसके बाद राशन था, कुछ फैमिलीज़ को जो ज़रूरतमंद थी उनको राशन दिया जा रहा था। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, जो बच्चियाँ घरों में काम करती थी उनको ला के उनको सिखाया जाता था कि आप स्विमिंग सीख लें, आप कुकिंग एंड बेकिंग सीख लें। वो सीखने के बाद अपने पैरों पे खड़े होकर उनके माँ बाप से जो दुआएं हमें मिलती थी वो मैं आज तक नहीं भूलता। हम एक छोटे से बीज से आज एक ताकतवर दरख्त बन चुके हैं। हमने अभी अभी 65 बेड का हॉस्पिटल कंप्लीट किया है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और 65 बेड का हॉस्पिटल जो हमें कॉस्ट किया है वो $5.2 मिलियन, ये आपने दिया है, जिनमें से $3 मिलियन हम इकट्ठे कर चुके हैं। और अभी मेरे 10 फंड है, रमज़ान से पहले ज़कात का टाइम है। हमारा ख्याल था कि आप पाकिस्तानी जब तक आप वापस आके पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। मैं उसकी एक मिसाल आपको देता चलूँ कि 1 लाख रुपए सैलरी कमाने वाला सफेद पोश आदमी आज अपने 4 बच्चों के समेत अपनी फैमिली को पढ़ा नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता, बिल नहीं दे सकता। और ये मैं वहाँ पे हर रोज़ 3000 बेनिफिशरी रोज़ाना हमारे सेंटर पे आते हैं नूर प्रोजेक्ट के ऊपर। एक से एक नई स्टोरी देखने को मिलती है। आपको ऑर्फन होम लेके चले जाएं तो वहाँ पे जो जदीद बच्चियाँ हैं, हर एक की कहानी है। किसी के बाप ने माँ को बच्चियों के सामने कत्ल कर दिया, वो बेटियाँ थ्रू जो फैमिली जो सपोर्ट है वहाँ पे उनके थ्रू हमारे पास आ जाती हैं। कुछ बच्चियाँ हैं जो जिनके माँ बाप फौत हो गए, आज जंजला आया था उसमें ख़त्म हो गए नॉर्दर्न एरिया से, वो हमारे पास आ जाते। हमारे पास सिर्फ बेटियां हैं, बेटों के लिए भी जगह कम हो पड़ गई है लाहौर के अंदर। लेकिन मजबूरी आप कितने लोगों को देख सकते हैं। आप सब, हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, जाके वहाँ पे सेंटर के ऊपर हॉस्पिटल बनाया ताकि वो माएँ जो बच्चा पैदा करने वाली रास्ते में रक्शे में बच्चा पैदा कर देती हैं या वो मर जाती हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, स्टंट एंड ग्रोथ का आप सुनते रहते हैं। लेकिन वहाँ तो किसी को परवाह नहीं है, आपको परवाह है, आप भेजते हैं। मुझे फौजिया बाजी यहाँ पे हैं, गाहे बाहे वो टीवी पे कुछ देखती हैं कि हम जब ये मैं पैसे भेज रही हूँ, ये मैंने वो देखा था टीवी पे, उसको हेल्प कर देना। डॉक्टर साहिबा हमें लाहौर में मिली, वो हमें कहती हैं कि ये हम ये देखो इसको हेल्प कर देना। हमारे इन्वेस्टर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आज जो ये खूबसूरत गुलदस्ता आप देख रहे हैं, सरफराज राना, जावेद भाई, सादात भाई, अजहर भाई, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे मतलब इतना उन्होंने दिल के करीब इसको रखा है कि आज फिर हमें यहाँ आपको बुलाकर आपके सामने खड़ा कर दिया कि आए मिल के अपने पाकिस्तान को संभालते हैं, बनाते हैं, उठाते हैं उठे। इकोनॉमिक कंडीशन हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मतलब कहते हुए शर्म आती है कि हमारे पॉलिटिशियन हमें ख़राब से ख़राब तर करते चले जा रहे हैं, उसको नीचे से नीचे लेते चले जा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन को वर्स्ट से वर्स्ट बनाते चले जा रहे हैं। आपको पता है, एक 5 मरले में रहने वाला एक घर जो सफ़ेद पोश का है, गरीब आदमी को तो सब हम पहुंच जाते हैं उसके पास, उसको उसके रिश्तेदार भी दे देते हैं, ज़कात दे देते हैं। लेकिन सफ़ेद पोश जो 50,000 कमाने वाला, 75,000 कमाने वाला, 1 लाख कमाने वाला, उस तक कौन पहुंचता है? कोई नहीं पहुंचता है। रोज़ अखबार में आप देखते हैं उसका 60,000 एक बंदे का बिल आया, वो हाथ नहीं फैला सकता था, उसने खुदकुशी कर ली। जिसके 6 बच्चे हैं वो पढ़ा नहीं सकता था, माँ ने खुदकुशी कर ली। हकीकतन ऐसा ही है। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि आपका दिया हुआ एक रुपया, इसमें कोई एडमिट कॉस्ट नहीं है। मैं अपने पैसों से यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने पैसों से ठहरता हूँ। खालिद भाई, पूरी दुनिया में हम लोग जाते हैं, वो मेरी चैरिटी है। हम सिर्फ 2 साल पहले हमने ये सब कुछ, ये चैरिटी इकट्ठी करनी शुरू की है, क्योंकि ये फैलता चला जा रहा था। हम पढ़ा रहे थे, पढ़ाते हुए में ख्याल आया कि जो बच्चे उनके बड़े हैं वो तो सारी ज़िंदगी घरों में गुजार देंगे काम करते करते, उनको मारे पड़ेगी। बेटियों का, मेरी बेटी तो सोए महल के अंदर, और मेरे हमसाई की बेटी या उस गली पार एक झोपड़ी में रहने वाली, वो जो है वो घरों में सफाई करे 5-5 हज़ार के ऊपर। मुझे ये गवारा नहीं किया। आज मैं हज़ारों बच्चियों को उनके पैरों पे खड़ा कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, नूर टेक्निकल वोकेशनल कॉलेज, वहाँ पे हज़ारों बच्चों को तालीम दे के, बेटियों को जो आवारा थे, यकीन करें कि कोई भी नहीं चाहता कि वो चोरी करे, कोई भी नहीं चाहता कि वो हाथ फैलाए। हर बंदा चाहता है कि काश हमारे जो
جن کا یہ کام ہے, جو اسٹیٹ کے ذمہ دار ہیں, کاش وہ اسکول بنا دیں گاؤں کے اندر, کاش وہ ہاسپٹل بنا دیں, کاش وہ سڑکیں بنا دیں. ہم تو وہاں پہ ترستے رہتے ہیں. آپ کے ایک وقت تھا ٹیلی فون لگوانے کے لیے ایم پی کی کال کروانی پڑتی تھی, ایک وقت تھا گیس لگوانے کے لیے, اب تو گیس خیر ہے ہی نہیں, اور ہم اور مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں اگر یہ این جی اوز کام نہ کر رہی ہوں اور آپ لوگ سپورٹ نہ کر رہے ہوں تو یقین کریں وہاں پہ آپ غربت کا جو حال دیکھیں آپ سے شاید برداشت نہ ہو. کیسے ایک آدمی آپ کو لگتا ہے کہ جی بڑے ہاسپٹل ہے وہاں پہ, آئے نا میرے ساتھ وہاں پہ, مجھے کسی ہاسپٹل میں لے کے چلیں, مجھے دکھائیں کہاں پہ فری علاج ہو رہا ہے. ہم یہ 14 پروگرام رن کر رہے ہیں, 14 پروگرام, 1 روپیہ کسی سے کاسٹ نہیں ہے. صرف یہ چیک کرتے ہیں ہمارے جو انسپیکٹرز ہیں کہ یہ واقعی ڈیزرونگ ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اگر وہ ڈیزرونگ ہیں تو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں, چاہے جتنا مرضی بڑا علاج ہو, جتنا مرضی بڑا لون ہو. کیا لون چاہیے ہوتا ہے ایک بیٹی کی شادی کرنے کے لیے؟ ایک ماں اپنے آنسوؤں سے کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا 50,000 روپے میں بیٹی کی شادی کر لیں گی. 50,000 روپے آپ ڈالر میں کنورٹ کریں, کیا پیسے بنتے ہیں؟ ایک یتیم بیٹی کو پالنے کے لیے مجھے صرف مہینے کا 35,000 روپے چاہیے ہوتا ہے. 80 بچیوں کو پال رہے. کیا آپ میں میرے لیے آپ کے لیے کا مشکل ہے؟ اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے. آپ بیٹا صرف میری 5 منٹ بات سن لیں, اس کے بعد میں نہیں بولوں گا, صرف 5 منٹ پلیز. آپ کے لیے میری یہ آواز پہنچانا, میں صرف آواز پہنچا سکتا ہوں, میں کسی کی گھر میں نہیں گھس سکتا, کسی کی جیب میں نہیں گھس سکتا. مجھے صرف آپ کو بتانا ہے. اور الحمدللہ میں اگر آپ کو 3 ملین جو پچھلے 1 سال میں ہم نے اکٹھا کیا آپ لوگوں نے دیا. ایسے دوست, ایسے لوگ, ایک بندہ بیٹھا ہوا سوچ رہا, ابھی مجھے جو 2 ملین چاہیے تھا, 1 ملین صرف ایک بندہ سعودی عربیہ سے آیا, مجھے نہیں جانتا تھا, میرے ہاسپٹل میں آیا, وزٹ کیا, مجھے کہتا امجد میں 15 کروڑ کا آپ کو دے رہا ہوں, آپ مشینری رکھیں اور اس میں سے جو آپ جو پیسے دے سکتے ہیں ان سے فیس لیجیے گا, 70% مجھے دے دیجیے گا اور 30% آپ رکھ لیجیے گا. تو میں نے صرف انہیں کہا, میں نے کہا سر میں نے نہیں پیسے لے لیے, میں نے وہ جگہ فیل ہی نہیں کر رہی ہے جہاں پہ کسی غریب بچے کا علاج ہونا ہے, غریب ماں کا علاج ہونا ہے, میں یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے پھر بھی وہ 15 کروڑ دے دیے. ابھی مجھے انہوں نے بلایا سعودی عربیہ, اور شاید وہ اور بھی زیادہ اس سے جائے. کون ہے, کون بھیجتا ہے؟ میں کوئی ایکٹر نہیں ہوں, آرٹسٹ نہیں ہوں جس کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں, نبیل آ جائے, شاہد افریدی آ جائے, لیکن اس کے بغیر ہمیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے. اور کیونکہ یہ اللہ ہے جس نے آپ کے دلوں میں ڈالنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, نمبرز آپ کے سامنے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ لاہور میں آپ کا کوئی جاننے والا ہے, آپ کا کوئی دوست ہے, فیملی ہے, اس کو بھیجے ذرا ایک دفعہ وہاں پہ. میں اصغر بھائی کو ابھی آئے تھے, میں نے دوبارہ کہا کہ آپ ایک دفعہ آئے تو صحیح, آپ ایک دفعہ آ کے دیکھیں تو صحیح جو میں کہہ کے جاتا ہوں یہاں پہ, کیا وہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. آپ دیکھ کے, ہم تو کچھ بھی نہیں, میرے نور گرامر اسکول جیسا اسکول پورے پاکستان میں نہیں ہے, لیکن بچے کس کے پڑھ رہے ہیں؟ درزی کے, نائی کے, موچی کے. اور وہ میں ذات کے لیے نہیں بتا رہا ہوں, میں ماسٹرز تک تو میں ایک سائیکل نہیں خرید سکتا تھا. میں نے زکوٰۃ 2,500 روپے لے کے اپنی ماسٹر پہ فیس دی تھی, اور آج میں جہاز بھی خرید سکتا ہوں. تو یہ کون ہے جو عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ ہے. اور میں سب سے زیادہ, میں اور خالد بھائی, میری موت کے بعد مجھے اللہ نے جتنا دیا ہے, میں نے آج اپنے بچوں کے سامنے, لاسٹ ٹائم میں کسی طرح کینیڈا میں تھا, میری بیگم سامنے بیٹھی تھی تو وہ مجھے منع کرتی ہے, لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے کہ میں نے اپنی ساری جائیداد جو اللہ نے مجھے دیا ہے, میں نے نور پروجیکٹ کے نام لکھ دیا ہوا ہے کہ میری موت کے بعد, بلکہ میں نے تو کہا میری قبر بھی نور پروجیکٹ کے اندر بنانا تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں تو کم از کم میرے باپ کو جس نے مجھے حلال کی رزق کھلائی ہے وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن یہ جتنا صدقہ جاری ہے میرے والدین, آپ کے والدین, وہ سب کو جائے گا. ہم یہ کسی نے یہاں سے کچھ نہیں لے کے جا سکا, یا مجھے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کسی کا باپ, دادا, نانا, چاچا کوئی ساتھ لے کے گیا تھا. یہ ساری جائیدادیں صرف یہاں رہتی ہیں. ہم آج کے دن جو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے, میں فنڈ ریزر نہیں ہوں, میرا صرف پیغام ہے, اور یہاں پہ عبداللہ راجہ ہیں وہ آپ سے آگے بات کریں گے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے, اور یہ کرتے ہوئے جاؤں گا, کسی نے کچھ بھی پوچھنا ہے, میں یہیں بیٹھا ہوں, کسی نے کچھ بھی دیکھنا ہے وہ پاکستان میں بھیجیں, اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ بھی یقین رکھ لیں, آپ کا سرمایہ پاکستان میں نہیں جائے گا,
पाकिस्तान कभी भी नहीं चलेगा। $33 बिलियन आप बेचते हैं हर साल, और अगर आपका पैसा जो पिछले कुछ अर्से से बंद हो गया जाना, इसीलिए वहाँ पे क्राइसिस है। इसीलिए रोजाना डॉलर जो है 300 पे चला जाता है या 350 पे चला जाता है, कभी पाउंड 400 पे चला जाता है, कभी 500 पे जाने की अफवाहें आ रही हैं। तो वो नीचे गिरता है। उसमें हम तो बड़े मजे से गिन रहे होते हैं कि मेरा रुपया वहाँ जाके 300 बन जाता है। उससे पूछें जो बिजली का बिल नहीं दे सकता। मेरा ड्राइवर मुझे आके, फाइनल बात है आपको बताते हुए चलता हूँ, सब 30, 35, 40 हज़ार तनख्वाह देते हैं। आप सोच के देखिए, उसका गैस का बिल इस दफा 25,000 पे आया। गैस कहाँ से पे करते हैं? आप लोगों के दिए हुए में से वहाँ पहुँच गए, और अल्लाह ताला दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। और वो ये नहीं कहता कि मैं तो उनसे खुश हूँ, वो दोनों से, किसी से दे के और किसी से ना दे के आजमाता है। खुशी की बात हमारे लिए ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि आज इस एनजीओ के अंदर, इस नूर प्रोजेक्ट के अंदर हम सब ये पैगाम सुन रहे हैं, और अल्लाह करे ये पैगाम हमारे दिलों में उतरे, और हम भी एक ईंट अपनी लगा सकें इस कारनामा के अंदर जिसमें मैं और खालिद साहब शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। On that note, I would like to invite Brother Abdullah Raja to kick off our fundraising effort. And inshallah, we hope that you will open up your hearts and your wallets. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm going to have a tough night. Usually you can gauge based on the response from the first salam whether people want to give. As a fundraiser, there's a couple of questions you ask yourself. And one of the most pivotal questions is, how do you motivate the unmotivated? Nobody is motivated to give money. Perhaps the answer is what Amjad Bhai was speaking about, a vision. What if you buy into the vision of the Noor project? What if you feel the pain of every child? What if you feel the famine? What if you not only see what the orphan is going through, but you feel their pain? I call that the lost sunnah, the sunnah of empathy. If one Muslim cried, the entire ummah cried. Today 1 billion Muslims are crying. There's not a tear to be spared for those Muslims all across the globe. My dear brothers and my dear sisters, let me begin. And I was speaking with Sheikh Saab just before this event, and he mentioned a very interesting word. I asked him, where did this idea come from? What really inspired you? And he used the word Quran. He said one of the things that was most pivotal, and I would see all of these children suffering, and I would give them, and I would give them, and then I began to read the Quran, and something inside of me shifted. We all have the Quran, yes? So let me share with you a story, a very similar story that when I was listening to Sheikh Saab, it kind of clicked in my mind. It's a Netflix documentary about a Muslim convert. His name is Richard McKinney. He's an ex-war veteran who used to go into Afghanistan, and he got injured there. He came back, New Jersey, Amjad Bhai is from New Jersey, into Indiana, his hometown, Muncie, Indiana. And he says, I hated Muslims. I hated them with a passion. What are these people? They kill each other over this Shia and the Sunni? Who are these people that just because they're born into a different creed and aqidah, they begin to fight with one another? I hate them. They injured me. They disabled me. Now I'm going to disable them. At the same time, there was a young woman, an elderly woman, sorry, Bibi, and I forgot her name, I believe it was Behram, Bibi Behram from Afghanistan. And she had just built the new Islamic Center of Muncie, Indiana. For those of you that don't know, Richard McKinney is a 2-time gold or silver medalist from the Olympic Games. He's a very, very patriotic American. He comes in and he goes into Muncie, Indiana, into his home, and he begins to build a bomb. This is from the Netflix documentary. You don't believe me? You can Google Richard McKinney. He begins to build a bomb, and he says, his wife says, every time he would go into Target, if he saw a woman with a hijab, he would pull off the hijab. And I would have to pull my husband off of that woman. He says that eventually I build the bomb. And I go to my nearest masjid, the newly built Islamic Society of Muncie, Indiana. I go in there, and as soon as I enter, it was an off day, Thursday, I enter, and in front of me was a smiling woman, Bibi. And she says, Assalamu alaikum. Now imagine this man, he says, I'm in a muscle shirt, my tattoos are popping out.
I have a big backpack and I'm wearing shorts, jean shorts. And he says, this lady looks at me and she says, Assalamu alaikum. She says, come, let me feed you. She cooks for him a home-cooked meal. And she says, why is the mosque so empty today? He says, because today is a Thursday. And you've come between the two prayers, Zuhr and Asr. Come back tomorrow. Tomorrow is the day of Jummah. Tomorrow 200 people will be in the masjid. So Richard McKinney, he thinks to himself, I'm going to kill 3-4 people today. I'll come back and kill 200. That'll make a difference. As she goes, she hands Richard McKinney, he says, when you come back tomorrow, read a little bit about us. Here's the Quran. So he goes home and he begins to read the Quran. Let me recite for you the Quran. I'm not going to translate it. You do your own translation in your head. Look at the rhythm of the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Look at the rhythm of the Quran. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. No translation. Feel the effects of the words of Allah upon you. Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Look at the Quran. So Richard McKinney, he reads this. Translation. Comes to the Jummah the next day, no backpack in hand. He notices all the Muslims as they're leaving. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. He says to this bibi, she says, teach me more about the Quran. 5 years later, I'm just making the story short for everyone, he becomes the president of the Islamic Society of Muncie, Indiana. Noor Project is building those bibis today. It's about empowerment. Another word that they mention is that they want to break the shackles of poverty. And they, whether they know it or not, is following the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A beggar comes to Rasulullah in Masjid al-Nabi. Ya Rasulullah, give me. Rasulullah, he says, no. What possession do you have? So he says, I own nothing except the bowl. And that bowl, me, my wife, and a few children, we eat from that bowl. It is our only possession. He says, go and bring that to me. He comes, Rasulullah takes it, leaves it up for the Sahabas like this. And he says, who will purchase this bowl from me? Rasulullah is selling, who wouldn't buy? So a Sahabi, he stands, raises his hands. He says, I'll buy it for you for 1 dirham. Rasulullah, he says, don't you look at the intricate pottery? This is not worth 1 dirham. Give me more. Look at the barter, look at the haggling that's happening, part of the business. Look at Rasulullah teaching the akhlaq to the companions. So a companion stands up. He says, Ya Rasulullah, I'll buy it for 2. So he says, yes, that's a fair price. Rasulullah, he takes the 2 dinars. He says, here's 1. Go feed your family with this 1 dinar and go buy an axe with the other and bring that axe to me. So he goes, buys that axe, brings it back to the Prophet. He says, tomorrow, I want you to cut up, on the outskirts of Medina is a small forest. Cut up the wood
and bring it to me tomorrow. He does so. He says, now go to this place in Medina. They buy and they sell wood. Sell your wood and come to me after a month. After a month, this companion comes. He says, today, Ya Rasulullah, from the moment I was born till today is the first day I have enough money to give sadaqah. Which sahabi should I give that sadaqah to? Rasulullah taught you how to give to others. Don't just give them and continue this chain of poverty so that tomorrow they'll eat and the day after tomorrow they'll be hungry again. No, teach them how do you break those shackles so that they not only teach themselves how to feed themselves, but they teach others how to feed their own families as well. That is the mission of Noor Project today. That is the mission of Sheikh Saab and Amjad Bhai that are sitting at the back today. And that's why you're all gathered here today. My dear brothers and my dear sisters, listen. I could ask you all, everyone raise your hands and give $100. Some of you can give 1,000. Maybe some kids here, they can give 10. It doesn't matter what you give, but give. But give. Can you imagine, and these are the things that really give me goosebumps. Imagine on the day of judgment, you're standing. Rasulullah comes up to you. Imagine, now imagine, I want you here with me. Rasulullah comes up to you, and he looks you in your eye, man or woman, and says, what have you done for my ummah? How will you respond? Do you have a response? There are some women, some children that have been martyred in places such as Palestine. There's very famous WhatsApp videos that are going around. There is a father who's carrying 2 of his kids. And he says, oh my children, don't be ghamgeen, don't be sad, don't be grief-stricken. You will see Rasulullah soon. The people in Pakistan, all they care about is Mera bacha, Meri zindagi, Mera ghar. That's the wrong mentality. That's not the mentality of a Muslim. The mentality of a Muslim is Hamara ghar, Hamara deen, Hamara desh, Hamara Islam, Hamara Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. When we can turn that man into hum, that me into we, then perhaps Pakistan can one day, once again, stand on its feet for the reason that it was meant to be incepted. And imagine how little steps, or perhaps no steps, we've taken. So my dear brothers, give, support, provide, nurture, above all, love. Love all of Pakistan and love your ummah and love each other. I pray that you all support. I'll pray that you all donate. And may Allah subhanahu wa ta'ala give you more and more and more and more so that you may continue to donate and donate and donate. Jazakallah and assalamu alaikum wa rahmatullah. ये सिलसिला तो इनका काफ़ी अर्से से चल रहा है, मगर हम लोग जब इंगेज हुए, ये 2-3 साल हुए जब ये बात हुई, और राना सरफराज साहब हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि जी नूर प्रोजेक्ट जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा काम कर रहा है, तो हम लोग ने इसमें थोड़ा सा हिस्सा डालना की कोशिश की। मगर लास्ट 2 दिन पहले जब हमने इनकी अमजद भट्टू साहब हमारे ऑफिस आए और हमने ये देखा कि ख़ास तौर पे जो लोगों ने यहाँ पर काम किया है, जितना ये काम लाहौर में हुआ है और जितने नीडी पीपल्स ने यहाँ पर काम किया है, वो खराज तहसीन है। और इसमें कोई शक नहीं कि इस जैसा प्रोजेक्ट बहुत कम लोग जो है ना वो चला रहे हैं खुद से। 2 लोग ऐसे लोग हैं जो अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं और कारवा बनता जा रहा है यहाँ पर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने राना सरफराज साहब का कि मैं इस इवेंट का पार्ट बना, इस फंड रेजिंग का मैं हिस्सा बना। और मैं अपने राना सरफराज साहब को बुलाना चाहता हूँ, प्लीज़ राना सरफराज साहब और सादा चौधरी। अच्छा, Sada Chaudhary or Rana Sarfraz or Bilal Chima, we are the one of the part of this event, to organize this event here, and I'm proud to be part of this one. On behalf of these 4 our partners, I like to donate
$1,000 for this noble cause to the Noor project. First of all. And Bilal Shima is the one of our member, and he is not available today because he was seriously ill. And hopefully in the next event he will be here. Definitely. And मैं जट एसोसिएशन वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. He is here and definitely they are coming and they approach us. Last time also the Noor project, they already came and donated the Noor project, and today is also here. So thank you very much जट एसोसिएशन साहब जितने भी हैं हमारे. और if you want. अच्छा, मैं इसके बाद अपने एक बहुत ही अच्छे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज हियर, शफकत अली फ्रॉम द ब्रैम्पटन सेंटर. मैं इनको दावत दूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज. इंजल भाई प्लीज आप भी आ जाएं प्लीज. खालिद भाई. अस्सलामुअलैकुम. जावेद भाई बहुत शुक्रिया. चीमा साहब काफ़ी मुझे वो बुला रहे थे, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, नहीं है. भट्टू साहब, शेख साहब, आप जो काम कर रहे हैं वो इंसानियत की खिदमत है, और उसका सिला अल्लाह की ज़ात ही दे सकती है. But I had an opportunity last year. हम लोग डेलीगेशन लेके गए थे, कैनेडियन डेलीगेशन टू पाकिस्तान. जो सैलाब आया था उसके बाद we went there, जो हमने वहाँ पर तबाहकारियाँ देखी, और गवर्नमेंट ने इनिशियली we announced 3 million, लेकिन वहाँ जाने के बाद it was raised to 33 million. बाद में इट्स मैचिंग सपोर्ट के साथ about 37 और 39 million कनाडा ने पाकिस्तान के लिए जो इमीडिएट रिलीफ के लिए सपोर्ट का ऐलान किया था. पर आई हैव सीन वहाँ पर जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो पेनफुल जो सिचुएशन मैंने देखी, कि जैसे अभी हमारे नौजवान स्पीकर ही वाज टॉकिंग अबाउट कि हम अपने लिए करते हैं और दूसरों के लिए नहीं करते, और ये सही बात है. अल्लामा फ़िक्री है, वी नीड टू थिंक अबाउट इट, कि वहाँ पर आप देखते हैं, इट्स वेरी कॉमन इन सिटीज़ नाउ दैट यू सी दैट हाउस इज बिल्ट, मेंशन, पर उसके साथ आप देखते हैं झोपड़ियाँ होती हैं. द किड्स, छोटे बच्चे, उनके जिस्म पे कपड़े नहीं होते, फूड तो दूर की बात है. I mean, they don't even have shoes. That's what I've seen. और we had a chance to go to दादू और सक्कर. वहाँ पर जिन लोगों की अपने घर होते थे, जिनके अपने जानवर होते थे, अपनी ज़मीन थी, अपनी काश्तकारी करके वो अपना घर चलाते थे, तो because of those situations they were on the street or tents में थे. और we had a chance to go to visit a school कि जो लोग घरों में, अपने घरों में रह रहे थे, they were they lost their houses. तो वो इमीडिएट रिलीफ के लिए उनको स्कूलों में और कॉलेजों में रखा हुआ था. तो वहाँ पे जो सिचुएशन है, इट्स डायर सिचुएशन, डेवास्टेटिंग. पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई हुई है कि वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट कैन हैंडल दैट, कि लोगों को जो सपोर्ट, जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकें. हमारे यहाँ देखिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती हैं, फंडिंग करते हैं, बट हॉस्पिटल चलते चैरिटी से हैं. आप ये देखें, यहाँ पर ट्रिलियम फाउंडेशन है, इट रन्स विद चैरिटी. जो कम्युनिटी कम्स टुगेदर टू डोनेट, और वो हॉस्पिटल से चलते हैं. और वो वहाँ पर तो जो सिचुएशन है, इट्स
really dire situation اور میں آپ لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کام میں دیکھیں ہم ڈونیٹ نہیں کر پاتے پر یو ہیو ٹیکن دیٹ مشن ان یور ہینڈ تو آپ لوگوں کی لائف میں ڈفرینس کرنے کے لیے ان کو ٹو پرووائڈ دیم فوڈ ٹو پرووائڈ دیم شیلٹر ٹو پرووائڈ دیم ایجوکیشن unless you have a conviction or heart کہ آپ ان چیزوں کو فیل کریں you can no one can do it. اور ہم لوگوں کے پاس اللہ نے یہاں پر بہت کچھ دیا ہے ہمیں. اگر ہم کمپیئر کریں I had a chance to go to Palestine ابھی last month. So when I see the misery یا پاکستان تو ہم لوگ were living in heaven on the earth. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا تو we can make a difference by donating, by giving اللہ کی رضا کے لیے. So I would request all of you please donate. یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنے لیے نہیں کر رہے, ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو انڈر پریویلیج ہیں اور وہ بھی انسان ہے. ایز اے ہیومن ہمارا ان کے ساتھ ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ that we support them. جو اللہ نے ہمیں مین دی ہیں اس کو ہم شیئر کریں ان کے لیے اور ان کے لیے درد رکھیں اور ان کے لیے سوچیں. So thank you for listening me and thank you for having me. I like to recognize your contribution on behalf of the government of Canada. Please keep up the great work and thank you for doing what you do. غافلانہ کلام کی ہے اس وقت کے حوالے سے کہ سو برس کی زندگی میں ایک پل, سو برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. غم کو سینے سے لگانا سیکھ لے, غیر کو اپنا بنانا سیکھ لے. درد سہ کر مسکرانا سیکھ لے. چھوڑ خود غرضی وفا راہ چل. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. پڑھنے دا نمان کری تو ہاتھ نہ آیا کہ میں پڑھیا.
जबार तार सदा बताओ छठी बिन करे मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे ते ढा दे जो कुछ टहदा एक बंदियां दा दिल ना टाणी सोना रब दिलों विच जी हम इस वक्त मौजूद हैं नूर प्रोजेक्ट के फंड रेज़र में. यहाँ पर यास्मीन सरदार साहबा हमारे साथ मौजूद हैं. शी इज़ टॉकिंग अबाउट सर्विकल कैंसर विच इज़ a very important subject and we just want to create an awareness on this subject. So Dr. Sabha, what do you say about this? I will say कि cancer cervix जो है, it is fourth most common cancer, fifth more common, and it is the sixth leading cause of deaths. This is the cancer which is most preventable and most accessible if diagnosed early and treated early. The Ontario government का अब 3 points का वो मोटो है कि अवेयरनेस पहला स्टेप अवेयरनेस और अवेयर करें, स्क्रीनिंग करें और ट्रीट इट अर्ली. तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का पर्पस है कि 2030 में 80% तक इरेडिकेट हो जाए एंड 2040 में इट शुड बी इरेडिकेटेड. तो नूर प्रोजेक्ट एंड GMS ग्लोबल मेडिकल सर्विस सोल्यूशन ने मर्ज करके इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव दैट द लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी वी आर गोइंग टू मेक द पब्लिक अवेयर. The color of ribbon is the media that camera will show. आप कैमरा शो करें कि ये जो कलर है वाइट एंड टील कलर, दिस इज़ WHO इंटरनेशनल उसके मुताबिक है जी. और जनवरी का मंथ जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है सर्विकल कैंसर के लिए. फरवरी का मंथ कनाडा में इट्स कॉल्ड ड्राई मंथ एंड ये कनाडा में इट्स अ यूनिक इनिशिएटिव. एंड द ड्राई मंथ का मतलब ये है कि नो वाइन्स, नो मनी स्पेंडिंग ऑन अदर थिंग्स बट टू गिव डोनेशंस टू सर्वाइकल कैंसर रिसर्च. तो यही हम लोगों का मकसद है कि पब्लिक को अवेयर कराया जाए, उनके सिम्टम्स बताए जाएं, वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए. यास्मीन साहब, ये देखा गया है कि ये जो कैंसर स्पेशली जो डायग्नोज होता है तो वो हमेशा इतना लेट स्टेज पे होता है कि लोग उसका क्योर करने की पोजीशन में नहीं होते. तो व्हाट वी आर डूइंग फॉर दैट, क्या आप ये रिकमेंड करेंगी कि किस तरह अपनी लाइफ में अर्ली उसको प्रोटेक्ट किया जाए, वो किस तरीके से कर सकते हैं? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. और माशाल्लाह से हम कनाडा में तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है. सो देर आर 3 levels ऑफ प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन जो यंग बच्चों में होती है 8 to 9 years, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, दे शुड बी वैक्सीनेटेड. आवर एम शुड बी 100% वैक्सीनेशन ताकि वो हो ही ना HPV इन्फेक्शंस के लिए. फिर होता है सेकंड लेवल पे कि अगर वैक्सीनेशन नहीं लगी तो रेगुलर फॉलो करें गाइडलाइंस और पीरियोडिकली एवरी 3 years 1 to 3 years पैप टेस्ट कराएं. और पैप टेस्ट हम कहते हैं कि यंग एज सेक्सुअली एक्टिव 21 years से लेके 65 एंड 70 years तक. और थर्ड इज़ कि अगर जब लीजन पता चल जाए तो उसको अर्ली स्टेज पे ट्रीट किया जाए. सो दीज 3 things, सो एजुकेशन, वैक्सीनेशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ द लीजन, दिस इज़ द वे. इंशाल्लाह ताला कनाडा में तो हम लोग लकी हैं कि वैक्सीनेशन भी है, पैप टेस्ट की स्क्रीनिंग भी है और अवेयरनेस भी. कंट्री लाइक पाकिस्तान वेरी अनफॉर्चुनेट, जहाँ पे रजिस्ट्री भी नहीं है, हमें डाटा भी नहीं सही पता, अभी रिसेंटली शुरू हुआ है. एंड वी आर ट्राइंग कि पाकिस्तान में सोसाइटी ऑफ गानी ऑन्कोलॉजी, कैंसर की सोसाइटी, उसका एक चैप्टर आई एम ट्राइंग टू मेक इट हियर इन कनाडा इन कोलैबोरेशन टू पाकिस्तान, ताकि हम एज अ कैनेडियन पाकिस्तान में कैंसर प्रिवेंशन को उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे मैनेज करें जो कि कनाडा में होते हैं. सो दैट इज़. थैंक यू डॉक्टर. आपने सुना नसीर अपना यास्मीन साहिबा को, इनके क्या गोल्स हैं और क्या इनके इमोशंस हैं. माशाल्लाह वी डेफिनेटली वी शुड हैव टू वर्क इट आउट विद हर एंड डेफिनेटली हम आपसे फिर मज़ीद बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान में इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम फैलाएं
اور آپ کے ذریعے آپ کے مزید پاکستان میں جو بھی آپ کے جو پروجیکٹس وغیرہ ہیں وہاں جو کچھ آپ کرنا چاہ رہی ہیں، جیسے بھی نور پروجیکٹس کے ساتھ کو ہم نے مرج کر دیا اپنے گلوبل میڈیکل سولوشن کے ساتھ، جو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے GMS ہیلتھ اینڈ ویلنس کا، اینڈ وی آر گیونگ 100% سپورٹ ٹو دا نور پروجیکٹ. The one thing I want to say to Canadian Pakistani brothers and sisters ko, कि please think of our Pakistani who are less fortunate and they have less opportunities for training. آج کل ڈیجیٹل ٹائم ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹائم ہے. آن لائن پلیز کولیبریٹ ود پاکستان یونیورسٹیز and Pakistani Institute, and so our students can be trained on the same standard as we got training in Canada. ونڈرفل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ یاسمین صاحبہ. میرے ساتھ خالد شیخ صاحب موجود ہیں جو کہ اس پورے پروجیکٹ کے جو نور کا جو آج یہ فنڈ ریزر ہو رہا ہے اس کے بانی ہیں. جی سر بتائیے آپ کا کیا کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا جو آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور یہ اتنا لمبا سفر کر کے جو آپ یہاں تک آئے ہیں؟ یہ ماشاء اللہ یہ اسپائر there's few things ایڈ اپ ہوتے ہیں. ہم لوگ پاکستان گئے، وہاں غربت دیکھی، فیل ہوا کہ یار ہمارا ملک ہے. عورت تھی، اولڈر لیڈی تھی، اولڈر مین تھا، ینگ تھا، وہ میرا باپ ہو سکتا ہے، میری ماں ہو سکتی تھی، یا میں ہوں، یا میری سسٹر، بڑی سسٹر، یا چھوٹی، یا میری بیٹی، یا میں وہ فیلنگ ہوتی تھا. اینڈ پلس ماشاء اللہ ڈیفینیٹلی قرآن ہیز اے لاٹ ٹو ڈو. ہمارا قرآن بہت اچھی طریقے سے ٹیچ کرتا ہے کہ کسی کی قدر کرنی، ٹیک کیئر آف یور فیلو مین. سو کافی مکسچر تھنگز آر انکلوڈیڈ ٹو انسپائر اس ٹو ڈو دس ماشاء اللہ. سو اس وقت تو آپ ملٹیپل سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں. آپ ایجوکیشن میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ ہیلتھ میں بھی کام کر رہے ہیں، پھر ویڈو وومنس وغیرہ کا بھی شاید آپ نے کچھ کیا ہوا ہے، اور آرفنس کا بھی کیا ہوا ہے. تو ان تمام ایریاز کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ well it's دیکھو فرسٹ آف آل میں ویری کلیئر، پہلے تو اللہ کا کام ہے، اینڈ اللہ نے ہم لکی ہیں کہ اللہ نے ہم کو چوز کیا تو یہ کام دیا. تو ایکچویلٹی وی آر ایکچولی ورکنگ فار اللہ. تو اللہ تعالیٰ خود ہی چلاتا ہے یہ چیزیں. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. ہمارا بیک گراؤنڈ ماشاء اللہ وی آر ویری لکی. ایز یو نو امجد بھائی ہیں، میں ہیں، ہم لوگ اکٹھے کر رہے ہیں. وی آر بوتھ ان دا فرام دا بزنس بیک گراؤنڈ. سو مینجمنٹ لیول میں ہمارا وی ور ایکسیلنٹ. سو فار ایز مینجمنٹ از کنسرن اٹس ناٹ این ایشو. اٹس جسٹ کہ جس آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کافی زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، اینڈ دیر از اے ریزن فار دیٹ. جس کو بھوک لگی اس کو کھانا کھانا ہے. ادھر پرابلم ہے کہ کھانا تو ہم بنا کے دے دیتے ہیں، وی ڈو 3000 میلز اے ڈے. وہ جو نہیں آ سکتے، وہ گھر میں جو بچے ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں. وی ڈو راشن. ماشاء اللہ لاسٹ ایئر الون جسے میں کہہ بتا رہا تھا کہ 4 million meals we served, and that's nothing. There's plenty more people. ہمارے پاس تو اپلیکیشنز اتنی پڑی ہیں that people are waiting کہ انہوں کو راشن ملے. پھر وہی بات ہے کہ کھانے کا ہو گیا. پھر اسکول کا جو ہمارے بچے ہیں، وہی میں بتا رہا تھا کہ ہمارے بچے جو آ رہے ہیں اسکول میں، گرامر اسکول ہمارا نور گرامر اسکول، اس کے اندر وہ پیرنٹس ان کے کبھی اسکول نہیں گئے، گرینڈ پیرنٹس نہیں گئے. یہ بچے سڑکوں میں روتے تھے. ان کو چانس دینا تھا بس خالی. اینڈ ماشاء اللہ وی گاٹ دیم ان اینڈ دے سو انٹیلیجنٹ ہمارے بچے کہ رائٹ اوے دے پک اپ. اینڈ یہ اسکول جو ہمارا ہے نا، یہ عام جسٹ ریگولر اسکول نہیں ہے. دس از اے اسکول وی وانٹ دا چلڈرن to be doctors and architects and pilots and so on. یہ لانگ ٹرم کے اسکول کی کار ہے. اس کے علاوہ ہم ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو کر رہے ہیں، اس کا ایشو ہے کہ بچے آر آلریڈی گرون، نہ گھر کا کوئی کرایہ دے سکتا ہے، نہ گھر میں راشن آ رہا ہے، ان کو اپنے ایشو. سو وہ ہم کیا کرتے ہیں، موسٹلی ٹین ایجرز ہیں، ان کو وی کین میک ڈاکٹرز اینڈ آل دیٹ. اٹس ٹو لیٹ اینڈ اٹ ٹیکس ٹو لانگ اینڈ ان پر انفارچونیٹلی. سو وی برنگ ایم ان اینڈ 3 مہینے کے کورس ہم ان کو سکھاتے ہیں. اینڈ دین وی فائنڈ دیم اے جاب اور وی گیو دیم اے لون ٹو بائی کمپیوٹر یا جو وٹ ایور دے لرن. تو دین ایٹ لیسٹ وہ پیروں میں کھڑے ہو کے ایٹ لیسٹ اتنا کما لیتے کہ دے کین پے دا رینٹ اینڈ بائی دا فوڈ اینڈ اپنے سبلنگس کو ٹیک کیئر کر لیتے ہیں بیسکلی ان دیٹ سینس. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ جو چیز مجھے آپ کی اچھی لگی پروجیکٹ کی وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ ان کو جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں فوڈ اور جو بھی سپورٹ ہو سکتی ہے فائنینشیل، لیکن ان کو آپ ان کے پیروں پہ بھی کھڑا کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ کسی اگر معاشرے کے اندر یہ تمام سلسلے شروع ہو جائیں تو اس میں جینیس پیدا نہیں ہوتے، پھر لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑا سا ایزی لائف کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ
क्या समझते हैं कि जो आपकी ये जो कोशिश है इसमें आपको अच्छा रिजल्ट्स मिल रहे हैं? माशाल्लाह अमेजिंग रिजल्ट है कि इट्स अनबिलीवेबल। सर मैं खुद देखा है कि जैसा मैंने भी बता रहा था कि एक तो पहले मैं साफ कहूँगा कि हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने अगेन थैंक यू या अल्लाह कि जो उन्होंने हमारे लिए सब के लिए किया हुआ है। हमारे पास छत है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास खाना है, कोई कमी नहीं है। एंड दिस पीपल, कोई बात है कि कुछ नहीं, तो आपकी बात वही है कि खाना तो देना है, भूख लगी है, पर फ्री भी नहीं बनाना कि ये नहीं कि रोज़ आई जाओ तो खाई जाओ तो कम ना करो, जाओ घर बैठ जाए, नहीं, वो भी नहीं कर। इसलिए हमारी ट्रेनिंग सेशंस, हम जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारी नई बिल्डिंग, एक एग्जिस्टिंग में 10 क्लासेस थे अभी राइट नाउ, उसके अंदर हमारे 2000 स्टूडेंट्स हैं। इतनी कामयाब है कि हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, 27 क्लासेस, 6000 स्टूडेंट आएगा। 6000 का मतलब, आई वांट टू पॉइंट दिस आउट, 6000 का मतलब है कि एवरेज फैमिली हम काउंट करते हैं पाकिस्तान में 6 लोग होते हैं फैमिली में। एक बच्चा, हमारे कल्चर में दैट्स द बेस्ट थिंग, एक बच्चा कमाता है, वो पूरी फैमिली को टेक केयर करता है, वो किराया भी देगा, वो राशन भी देगा, अपने सिबलिंग्स की टेक करेगा, अगर बड़ी बहन हो उसकी शादी भी कराएगा। ये हमारी खूबी है, हमारे ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ अभी हेल्पिंग द। मजीद आपका क्या गोल है अभी इस वक्त जो यहाँ पर आप आए हुए हैं? जैसे कि बताया गया कि आप यूएस में काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपने कनाडा से शुरू किया है ये चैरिटी, तो अभी आपका यहाँ का चैरिटी स्टेटस तो अप्रूव नहीं हुआ है गालिबन, तो आपने वो अप्लाई किया है? मतलब अब क्या आपका प्लान है यहाँ पर? Absolutely, we are a 501c3 in the US. We are registered, mashallah, from the beginning. We are registered in Pakistan because that's where we have the operations going on. हम अभी कनाडा में आए हैं, we have already registered, but mashallah it takes time. It takes 8 to 12 महीने लग जाते हैं. But we have already coordinated with the other foundations where they are helping us to collect the funds and so That on. means you can in a position to, I mean, issue a tax receipt also. Absolutely, yes. Thank you very much. Okay, thank you. आपका बहुत शुक्रिया। सर दुआओं में याद। Thank you. चलो। We are with the Dr. Zubaida Siddiqui practicing here in Streetsville. तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं, आइए पूछते हैं कैंसर के हवाले से, और आज का जो प्रोग्राम है इसमें आज ये मौजूद हैं जो कि फंड रेजर है नूर प्रोजेक्ट्स का। तो डॉक्टर साहब बताइए कि क्या आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें व्हाट डू यू थिंक, लाइक हम लोग अवेयरनेस के लिहाज से बहुत पीछे हैं गालिबन। दैट्स वेरी ट्रू। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, और दूसरी अलमिया की बात ये है कि हम लोग शर्म और लिहाज में मारे जाते हैं। हम लोगों के जो एजुकेशन लेवल है और जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। हमें ये ज़रूरी है कि हम नए दौर के साथ, नए दौर की ज़िंदगी और नए दौर की डिमांड्स को समझें, और हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने चाहिए। अलमिया की बात ये है कि इवन हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, या जैसे हम अपने, मैं जब पेशेंट्स देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कई लोग हैं जो वैक्सीन्स के ख़िलाफ़ हैं, कितने लोग हैं जो मैमोग्राम्स नहीं करवाती हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो पैप टेस्ट नहीं करवाती हैं। क्यों? कि हमारी जो तहज़ीब है और हम एक झिझक का शिकार हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक उस झिझक को और उस कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सके। आई विश कि अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे ज़्यादा गौर करें और हम उस पर तवज्जो दें और हम अवेयरनेस फैलाएं, तो आई होप कि हम भी अपना बचाव अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। तो आप जो देखती हैं, जो हमारी कम्युनिटी में, स्पेशली जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, मैं ये कहूँगा, इसमें आप क्या समझती हैं कि किन चीज़ों की तरफ ख़वातीन को आप क्या मैसेज देंगी? मैं अपनी बहनों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ इस झिझक से बाहर निकलें। आपको प्रिवेंशन की ज़रूरत है। एक ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको आप उससे आप
लाइक इग्नोरेंस ना बरतें और अपनी पूरी तवज्जो से और अपनी पूरी कोशिश करें कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स आपको अवेलेबल हैं उसमें ताख़ीर ना करें और अपने डॉक्टर को देखें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें. आई नो कि फैमिली फिजिशियंस की कमी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वॉक इन क्लिनिक्स हैं, तो कोई चीज़ भी आपको रोके नहीं. आपकी जो बेसिक ज़रूरत है उसको आप पूरा करें. कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि आप समझती हैं कि वो सामने आए तो आदमी को उसमें डिले नहीं करना चाहिए ख़वातीन को? चूँकि हमारे यहाँ ये देखा गया है कि तमाम फैसिलिटीज़ के होने के बावजूद लोग डॉक्टर्स के पास उस वक्त जाते हैं कि जब बिल्कुल उनका जो है कि एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि जो अनक्योरेबल होता है. तो आप क्या समझती हैं? तो देखें, हम लोग बाज़ यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स हैं. कुछ लोग तो ऐसे आते हैं मेरे पास जिनको कुछ भी नहीं होता और वो कहते हैं मेरे MRI भी करवाओ, तो मेरा CT स्कैन भी करवाओ, मुझे ये हो गया तो वो हो गया. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल घर में बैठ के बर्दाश्त करते रहते हैं और वो बहुत आखिर में आते हैं. मसलन मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट देखी जिनका ब्रेस्ट कैंसर नेक्रोटिक हो चुका था, जिसमें कि पस पड़ चुका था, एंड शी नेवर सॉ अ डॉक्टर क्योंकि उनको शर्म आती थी कि वो कैसे अपना बॉडी किसी को बताएं. तो मेरे आंसू निकल आए कि इतना आपने बर्दाश्त किया. और अनफॉर्चुनेटली जब हमने उनके टेस्ट किए और उनको भेजा, उनका सारा इलाज वगैरह किया, तो इट वॉज टू लेट. उनका ब्रेस्ट कैंसर फैल चुका था. लेकिन अगर वो 1 महीना पहले आ जाती या जब 2 साल पहले उनको तकलीफ़ हुई थी, एक छोटी सी गिल्टी थी और उन्होंने उसको इग्नोर किया. तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो छोटी सी गिल्टी है, कोई ज़ख्म है जो ठीक नहीं हो रहा, अगर कोई वैजिनल डिस्चार्ज हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा, इट कुड बी कैंसर. सर्विकल कैंसर आजकल बहुत फैल रहा है और हमें उसकी हिफाजती तदबीर ज़रूर करनी चाहिए. और उसके लिए वैक्सीन्स है, उसके लिए मेमोग्राम है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू बिफोर हेड ऑफ टाइम. डॉक्टर ज़ुबैदा सिद्दीकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का और ये मैसेज देने का कम्युनिटी को, ख़ुसूसन हमारी ख़वातीन को, कि अपनी सेहत का ख्याल रखें. चूँकि आप पूरी फैमिली को लेकर चलती हैं, इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को सेहतमंद रखना है. और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी छोटी सी कोई भी चीज़ आपके अंदर क्रिएट होती है, जैसी डॉक्टर साहब ने बताया, तो फौरी तौर पर उसको, बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए. आप उसको फौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट करें. हो सकता है कि आपके लिए वो आगे आने वाली मुश्किल से आपको निजात दे दें. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मेरे साथ अमजद वट्टू साहब मौजूद हैं जो कि को फाउंडर हैं इस प्रोजेक्ट के, नूर प्रोजेक्ट के. तो वट्टू साहब बताइए, आपका जो ये आगाज़ हो रहा है कनाडा में जो आप कर रहे हैं, इससे पहले भी आप यहाँ से डोनेशंस ले चुके हैं या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट? नहीं, दिस इज़ द थर्ड टाइम सर. और वो ये लकी के पहली दफ़ा अवेयरनेस प्रोग्राम था, सेकंड टाइम फंड रेजिंग की, लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया. और मुझे हमेशा ही कैनेडियन पाकिस्तानी तो वैसे ही मेरे दिल के बड़े करीब हैं, क्योंकि यहाँ मेरे इतने प्यारे दोस्त रहते हैं. और ये सारी जो गुलदस्ता आज आप देख रहे हैं, ये इसमें सरफराज राना, जावेद साहब, सादात, इसने सारे वो दोस्त हैं जिन्होंने ये सब लोगों को इकट्ठा किया और नूर प्रोजेक्ट के मुतालिक बताया. नूर प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? ये अल्लाह का नूर है जो हम फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उन लोगों के लिए जिनका कोई वाली वारस नहीं है. जो वो कहते हैं ना, लाइन से नीचे, गुर्बत की लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं, इनके बच्चों को पढ़ाना, इनको खाना खिलाना, राशन देना, ये सारा हमारा काम अल्लाह ने हमें सौंपा हुआ है. इनके पैरों पे खड़ा करना, टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, यतीम बच्ची हैं तो उनको पालना. एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया था, आपके ये प्रोग्राम की वजह से बता दूँ कि यूरोप से 6 मुल्क हमें विज़िट करने आ रहे हैं नूर प्रोजेक्ट को, क्योंकि हमारी बच्चियाँ गेम्स के अंदर इतनी आगे चली गई हैं. ऑर्फन बच्चियाँ जिनको हमने फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कराटे सिखाए हैं. पंजाब गोल्ड मेडल जीता है हमारी बच्चियों ने, ऑर्फन बच्चियों ने पंजाब गोल्ड मेडल हॉकी के अंदर. और फीफा के थ्रू हमारी बच्चियाँ फुटबॉल खेल रही हैं. तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन 2-3 ईयर्स हमारी बच्चियाँ नूर प्रोजेक्ट का, हमारा नाम पाकिस्तान का इतना रोशन करने वाली हैं कि अभी तो लोग खुद आएंगे हमारे पास, यार ये बच्चियाँ कहाँ से आ गई हैं. आपने जब भी
جو نیچے سے جو جتنے بھی کھلاڑی دیکھیں گے, کامیاب بچے دیکھیں گے, وہ آپ کو نیچے سے نیچے سے آتے ہوئے نظر آئیں گے. اوپر سے جو امیر کا بچہ ہے وہ تو اڑتا ہی اے سی میں سویا ہوا رضائی لی ہوئی, ہمارے بچے کہاں اٹھتے ہیں. یہ غریب کا بچہ ہے جو سارا دن دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, پھر بھی نہیں تھکتا ہے. تو اس کو ہم نشو و نما اس کی کر رہے ہیں, اس کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, گیمز میں لے کے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے بڑی اللہ سے امید ہے کہ سب پاکستان کا نام روشن کریں گے. اس ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کمپٹنسی کو جو ہے نا پروموٹ نہیں کیا جاتا, اور جو بھی سلسلہ ہے وہ سب سفارشوں پہ چل رہا ہے. تو آپ نے اس چیز کو جو ہے اوائڈ کیا ہے یقیناً. جی, میرا تو ایک وہ شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ گلہ کرتے رہنا, شکوہ کرتے رہنا گورنمنٹ سے. ہم نے اپنی جگہ پہ میرٹ رکھا ہے. میرٹ کے اوپر ایک ہی چیز ہے کہ اگر کوئی ڈیزرونگ ہے تو ہمارے پاس آتا ہے, ورنہ ہم نہیں لیتے ہیں. اگر کوئی فیس پے کر سکتا ہے تو وہ جائے ایل جی ایس میں. نور گرامر اسکول میں آنا ہے بچے نے, اس کا زکوٰۃ کا حقدار ہونا ضروری ہے, اس کا لیس پریویلیج ہونا ضروری ہے, اور وہ ہماری ٹیم جو ہوتی ہے, انسپیکٹر ہوتے ہیں, وہ چیک کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو ابھی تک آپ نے کتنے بچوں کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں اسکول میں, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ سر 12 سال ہو گئے. اسکول میں 680 بچے ہیں اس وقت. ٹیکنیکل ووکیشن اسکول میں 500 بچے ہیں. ٹوٹل 1100-1200 بچے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں, ان کے پیروں پہ کھڑا کر رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں ٹیکنیکل ووکیشن اسکول میں جو گھروں میں کام کرنے والی بچی ہیں. اب جب وہ گھر سے اٹھاتے ہیں تو ان کا 5000-7000 کی جو ان کی نوکری ہے اس کی جگہ ہم راشن دے دیتے ہیں. اچھا, راشن دیتے ہیں تو وہ ہمارے سے جب یہ ہنر سیکھتی ہیں تو وہ مارکیٹ میں ان کو 35-40 ہزار کی جاب مل جاتی ہے. تو وہ اپنے گھر کے ان کا خاندان کا, جہاں پہ 7 بچے مل کے کام کریں تو 35-40 ہزار کماتے ہیں, اور پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. مطلب ایک بچی نے اگر میک اپ کا کورس کیا ہے تو وہ جب کرتی ہے, میک اپ کرنا شروع کرتی ہے تو شروع میں 35-40 کماتی ہے, بعض دفعہ وہ ماشاءاللہ لاکھ 1.5 لاکھ میں بھی چلی جاتی ہے. تو ہنر ہے نا جو سیکھ کے آگے سے آگے. کانٹریکٹر, ایک بجلی کا کام سیکھتا ہے بچہ, وہ کانٹریکٹر بنتا ہے, شروع میں 35-40 میں جاتا ہے ایز اے فری لانسر, لیکن جب وہ کانٹریکٹر بن جائے گا تو لاکھوں روپے کمائے گا. تو ہم جو انگلینڈ, امریکہ, ویسٹ میں اور ایسٹ میں ہو رہا ہے, ہم ان کو ملا کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں تاکہ یہ پاکستان کا تقدیر بدلیں انشاءاللہ. یہ جو آپ کے یہاں کوئی ایپٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ کا بھی سلسلہ ہے کہ آپ ایپٹیوڈ دیکھتے ہیں بچوں کا, ان کا رجحان کس طرف ہے؟ وہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے نا. آپ کو کہیں پہ بھی مطلب کہ میرٹ رکھنا ہے تو میرٹ کے اندر تو بچے کو تو آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. مطلب ہمارا میرٹ ہے, ڈیفینیٹلی ہے, لیکن کیونکہ بچے ہیں, غریب کا بچہ ہے, وہ اگر نہیں بھی پاس کرتا ایگزام تو اس کو چانس ضرور دیتے ہیں کہ اگر وہ آ کے وہاں سیٹ ہو جاتا ہے, جو کہ 99.99% سیٹ ہو جاتے ہیں کہ بچہ اس کو محبت مل رہی ہے. ہم مارتے نہیں ہیں. ہماری ٹیچرز جو ہیں ان کو ٹریننگ ہے کہ بالکل ان کو ماں کی طرح پالنا ہے. آپ یقین خدا, میں خدا کو حاضر ناظر جان کہہ رہا ہوں کہ شاید 1 یا 2 بچے آج تک انویسٹیگیٹ ہوئے ہوں, لیکن سارے کے سارے بچے ماشاءاللہ پرفارم کر رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. قد ان کے, کیونکہ کھانا ہم خود کھلا رہے ہیں ان کو, تو ان کے قد میرے سے بھی اوپر بڑھ گئے 6ٹھی کلاس میں. تو یہی میں باہر دیکھتا ہوں, آسٹریلیا میں جاؤں تو سڈنی میں جا کے دیکھا جو مطلب پری اسکول کے بچے قد ان کے ہمارے جتنے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو خوراک اچھی مل رہی ہوتی ہے. تو جو خوراک میں کھا رہا ہوں, جہاں سے مجھے راشن آ رہا ہے, وہیں سے راشن ان کے لیے کھانا بن رہا ہے. ابھی تک آپ نے کتنے وہ نکالے ہیں گروپس جو ہیں جو کہ نکلے ہیں, جو کہ جابس پہ چلے گئے ہوں یا جو کہیں پر اپنی عزت کی نوکری سے اپنے روٹی کما رہے ہوں؟ نمبر نہیں ہے لیکن ہزاروں میں ہیں, کیونکہ ہر 3 مہینے بعد ایک لاٹ 500 کی نکل کے جاتی ہے, تو اس کو 10 سال کے اوپر ڈیوائڈ کر لیں تو بہت بڑی تعداد ہے. الحمدللہ پاکستان کے یہ نمبر, اسی لیے پاکستان کا عمران خان نے بھی اس کو یونیک پروگرام کہا تھا, اور یہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر ایک نور پروجیکٹ بن جائے تو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اور کوئی تعلیم سے باہر نہیں ہوگا, کوئی ٹیکنیکل ووکیشن اسکول سے باہر نہیں ہوگا. تو اللہ کرے انشاءاللہ تعالی اللہ پاکستان میں اچھی حکومت لے کے آئے اور یہ والا نور پروجیکٹ ہر علاقے میں پنپتا ہوا نظر آئے. ابھی آپ کن ایریاز کے اندر ہیں لاہور کے؟ ابھی لاہور میں ہیں, اور مری کے اندر ہمارا ایک دسترخوان ہے اور ایک کلینک ہے. لیکن وہ کیونکہ گھر تھا وہاں پہ, تو میں نے سوچا یہاں پہ جو پہاڑی علاقے میں لوگ غربت بہت ہے, وہاں پہ جب میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ دسترخوان شروع کر دیے. 400-500 لوگ روزانہ وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں, اور ایک کلینک بنا دیا کہ غریب آدمی ہے تو اس کا علاج ہو سکے. تو دوسرے شہروں میں پنجاب کے جہاں بہت زیادہ پسماندگی ہے, وہاں پر بھی آپ کو کچھ پلان ہے؟ جی 100% پلان ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ابھی پانی کے پلانٹ لگائے ہیں پورے پاکستان میں. ہم نے تقریباً کوئی 12-14 پلانٹ لگائے ہیں بڑے والے, جہاں پہ پانی بالکل نہیں آتا تھا, اسٹنٹن گروتھ تھی, بریسٹ کینسر ہو رہا تھا وہاں پہ. وہ کیا ایک زہر قسم کا آتا ہے, اس میں
सैनिक पता नहीं क्या होता है वो पानी से निकलता था, वहाँ पे हमने लगाए हैं। लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला पढ़ाई भी लेके जाएंगे, तालीम भी लेके जाएंगे। जैसे जैसे लोग हमें हेल्प करते चले जाएंगे, हम इसको फैलाते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। चलें, ये थे अमजद भट्टू साहब जो कि हमारे साथ बात कर रहे थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर। बड़ी मोहब्बत, थैंक यू। मेरे साथ मोहम्मद जावेद साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ कनाडा में इनके एम्बेसडर हैं। और जावेद साहब बताइए कि आप इनका जो प्रोजेक्ट है, जो नूर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में ये शायद तीसरी बार यहाँ पर आए हैं, तो इससे पहले भी आप इनके साथ इन्वॉल्व रहे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये तकरीबन 2-3 साल से आ रहे हैं, और मगर लास्ट ईयर हमारा सही मानों में इनसे और इनके जो काम से जो है वास्ता पड़ा। और जब हमने देखा कि ये जो काम कर रहे हैं काफ़ी ऐसे काम है जो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है और जो लोग बहुत कम लोग कर रहे हैं और इंडिविजुअली कर रहे हैं। 2 लोग ऐसे हैं जिसमें खालिद शेख साहब और अमजद भट्टू साहब, दोनों फाउंडर हैं और जगह जगह जाके अपने पैसे अपनी जेब से लगा के, जैसे सस्ती रोटी है ये बहुत मशहूर है, आप लाहौर जाएं तो वहाँ पता लग जाता है कि यार सस्ती रोटी एक ऐसा काम है जहाँ हर आम आदमी बेचारा जिसको खाने के लिए मुश्किलात हैं वो वहाँ जाता है और वो आराम से उसको अवेल कर सकता है। इसी तरह के स्कूल है, ऑर्फन गर्ल्स का ऑर्फन फार्म हाउस बनाया हुआ है इन्होंने, डिस्पेंसरी है। अभी इन्होंने जो लास्ट हमसे 15 दिन पहले जब बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि एक ऐसा हॉस्पिटल जो है ना वो बन रहा है जो कि 60 बेड का मुश्तमिल है और वो लाहौर के अंदर मेन है और लोगों के लिए, और ये भी मुफ्त होगा सारा। तो इसके लिए फ़ंड रेजिंग स्टार्ट करी है इन्होंने पिछले, और ये ज़कात सदकात ये सब अवेल करते हैं इसमें। तो दिल जो है ना, आपको पता है हर आदमी का, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे ये होता है कि किसी तरह पाकिस्तान तक जो है ना वो हम किसी को फ़ीड कर सकें, किसी को दे सकें, अपने ज़कात सही लोगों को पहुँच सकें। मैंने एक चीज़ मुझे यहाँ अच्छी लगी कि इन्होंने बताया कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कोई नहीं है। मैं ये देखता हूँ जो दूसरे इदारे काम कर रहे हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतनी होती है कि वहाँ तक पैसे पहुँचते पैसे आधे हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इनके मामले में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो इस चीज़ को बड़ा नज़रों में रखा है, मैनेज किया है। बिल्कुल, यही चीज़ हमें भी बहुत अट्रैक्ट करी जब कि हम दूसरे किसी भी एसोसिएशन में डालते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यकीन करें वहाँ पर हम $100 डालें तो वहाँ पर 60 जाते हैं। और यहाँ पर ये सारी एडमिन कॉस्ट आज की भी जो है, आप एडमिन कॉस्ट ये हम लोगों ने आज जो है ना अरेंज किया सारी एडमिन कॉस्ट ये पर्सनल लोगों से गई है कोई इसमें, और ये ख़ुद कहते हैं अमजद साहब और ये लोग इसको कर रहे हैं। कोई इसमें से जो पैसे डोनेशन में उसमें से 1 रुपया भी ये कम नहीं करते। जो डोनेशन है $100 किसी ने दिए वो $100 ही इसकी रसीद कट रही है और $80 ही जा रही है वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी कहते हैं अचीवमेंट है इन लोगों की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें आज का बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है, तो शुक्र अल्लाह का। चले, ये थे मोहम्मद जावेद जो कि इनके को फाउंडर हैं, और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको मज़ीद ऐसे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। Guys, a little introduction. Zubaida is practicing in Mississauga. It's not easy to get the GP. These days, it's very, very hard. Today, luckily, she is among us. Make good connection for your friends, family. It's not easy to bring her. And she's going to talk on a very important subject. Vaccination, please. Go ahead, Zubaida. Big clap for her. Thank you, Dr. Dusty, for such a wonderful introduction. So I'll start again, and I will start with salam again, and brothers and sisters, assalamu alaikum. Hello. Is it good now? Is it good? Can you hear me? Yes. Okay. Sorry. So, I'm literally stunned, I'm amazed, and I'm so motivated. I feel honored to be here among the wonderful people, because इंसान के रूप में फरिश्ता अगर कोई होगा तो वो यहाँ के लोग हैं, and I'm feeling so honored to be among themselves. Well, my topic is very different, but I think
that in each and every one of us, we have some qualities, we have some abilities, and we can work for the betterment of humanity and for our country in each capacity. Whatever we can do, we should do. Today, I was asked to present a topic about the HPV and the cervical cancer, and I was kind of surprised, and I said, yaar, itna common topic hai, how can I be teaching them, because everybody knows it. And then my dad used to say a sher, and it is for Mr. Bhattu, because he likes Urdu, so I'm going to say a sher, and it is, अंदाज़े बयां बात का मफ़हूम बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं. So, इसी तरह, cervical cancer is not a new thing for people who are living in Canada, but I think it's very new for our people in Pakistan. And the surprising thing is that even I see people from my community who are living in Canada for years, but they don't seek medical advice, they don't seek medical attention just because हमारा शर्म, क्योंकि दिल है पाकिस्तानी, तो हम शर्माते हैं and we don't seek attention on time. So, talking about human papilloma virus, what is human papilloma